Have you ever wondered why you cannot record proper compressed internal RAW in your mirrorless cameras? Whenever you want to record compressed RAW, you have to use some sort of an external recorder like an Atomos or a Blackmagic Assist. But आप कभी भी compressed RAW internally नहीं shoot कर सकते. There is one company that is solely responsible for this, and that is RED. RED was one of the first companies who designed digital cinema cameras. But soon RED realized that there was a big problem with the raw recording. The file sizes were huge and there were heat issues as well. And so their engineers decided to design a new form of RAW, and they designed compressed RAW, which could be shot internally. And this move was revolutionary because just like you capture photos in JPEGs and RAW in your cameras, now you could have the capability to shoot a RAW video internally in your camera just because it was compressed. The file sizes were reduced to a great extent, and that is what enabled the cameras to shoot RAW internally. But things didn't go that smoothly. Red decided to patent this internal compressed RAW so that you could only use internal compressed RAW in their cameras. ये जो मूव था इसने मार्केट को बहुत बुरी तरीके से हिला दिया था उस टाइम पे बिकॉज नाउ रेड लिटरली ब्लॉक्ड द अदर कंपनीज फ्रॉम doing something as simple as compressing a raw format internally. I can understand this move from a business point of view, but I am against this because it affects all of us camera users. The way the Red drafted this patent, it didn't only prevent the other companies from doing internal compressed raw the way Red did. मतलब सिर्फ जिस तरीके से Red ने raw compress किया था, सिर्फ उसी तरीके से नहीं, Red के patent ने किसी भी तरीके का compressed raw, which was even if it was remotely similar to Red's raw, Red के patent ने एकदम ब्लॉक कर दिया. मतलब आप किसी भी तरीके का इंटरनल कंप्रेस्ड रॉ अपने कैमराज में नहीं दे सकते. आई मीन इमेजिन इफ योर कैमरा हैड एन इंटरनल रॉ कैपेबिलिटी. आज हमारे सारे सोनी, फूजी, ये सब कैमराज में अगर कंप्रेस्ड रॉ इंटरनली मिल सकता तो हम सारे कैमराज में रॉ शूट कर रहे होते. एंड वी कांट डू इट बिकॉज ऑफ रेड. आई फील लाइक दे टुक इट टू फार बिकॉज अगर पैटेंट में सिर्फ ये होता कि आप जिस तरीके से रेड ने कंप्रेस्ड रॉ बनाया है उसको नहीं यूज़ कर सकते तो फिर भी ठीक होता. बट रेड कंप्लीटली स्टेटेड दैट आप किसी भी तरीके का कंप्रेस्ड रॉ नहीं दे सकते हो इंटरनली अपने कैमराज में. आई नो रेड कैमराज आर अमेजिंग एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट दिस मूव एज अ कंपनी वाज नॉट गुड. You can give normal raw internally in cameras, but you cannot give compressed raw, which is, मैं क्या बताऊँ भाई, ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है सोच के भी. एंड गिविंग नॉर्मल रॉ इंटरनली इज quite impractical because of the heat dissipation issues and the huge file sizes. Canon even gave normal uncompressed RAW in one of their cameras, and there were huge issues with the recording, and there were heat issues with the camera and a lot of other things also. Red के lawyers ने इतने सारी companies को sue करा है based upon this only, including Sony, DJI, and even Apple also, such a huge company. If they tried any form of compressed RAW internally, Red's lawyers will attack them right at that moment. Even if you're planning to do that as a company, Red's lawyers will attack you. इससे पहले आप बोलो कि ब्लैक मैजिक में तो आप इंटरनली रॉ शूट कर सकते हो. एक्चुअली इनिशियली ब्लैक मैजिक सिनेमा कैमराज में अनकम्प्रेस्ड रॉ ही देना शुरू करा था. एंड देन दे डिज़ाइन बी रॉ, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू कंप्रेस्ड रॉ. बी रॉ ट्रूली कंप्रेस्ड रॉ नहीं है. यू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन श्योर, बट वो ट्रू कंप्रेस्ड रॉ नहीं है. एंड इट इज़ डिफरेंट इनफ कि रेड ने उनको स्यू नहीं करा ब्लैक मैजिक को. Anyways, this was the whole situation till 2023. कोई भी कैमरा आपको इंटरनल रॉ नहीं दे सकता था. That was the reality of the market. Then comes 2022. Nikon ने कैमरा रिलीज किया Z9, and after a few months they gave a firmware update to its users which allowed them to use internal compressed RAW. And they were already prepared for the repercussions. It's like they were challenging Red कि भाई आओ हमको sue करो. And that is what Red did. Lawyers गए उनके अगेंस्ट, एंड निकॉन ने rather than taking a step back, they started to fight this in the court. केस चला, and in 2023 April, Nikon actually won.
They didn't technically win because the case was dismissed, but they kind of won. Let me explain the whole situation here. लोग ये कहते हैं कि उस केस में हुआ ये होगा कि निकॉन ने जिस तरीके से टैकल किया रेड पे, दे केम वेरी क्लोज टू इनवैलिडेटिंग द रेड्स पैटेंट। और रेड की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उनका पैटेंट है, बिकॉज दैट इज़ देयर बिगेस्ट वेपन एक्चुअली। तो रादर देन गेटिंग their patent getting invalidated could have been a disaster for red. So they came to a mutual understanding. The case was dismissed. There was no official ruling against anyone, and the result was Nikon. इसके दो results हुए basically. Nikon could continue using uh, Nikon could continue using their internal compressed RAW. So in today's time, अगर आपको internal RAW record करना है किसी mirrorless cameras में, the only two options that you have are Nikon Z8 and Z9. ठीक है, और किसी ब्रांड के, हमारे जो रेगुलर ब्रांड्स हैं उनमें कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिनमें आप इंटरनली कंप्रेस्ड रॉ शूट कर सकते हो। दूसरी चीज़ हुई, क्योंकि केस डिसमिस हुआ था, कोई रूलिंग नहीं थी ऑफिशियल, तो रेड अपना पैटेंट रख सकता था। तो रेड इज़ कंटिन्यूइंग विद देयर पैटेंट स्टिल। So technically, not every other brand can still give compressed internal RAW. Why is this so exciting for camera industry, especially for video shooters? I am pretty sure other brands saw what happened. ठीक है, and I'm pretty sure other brands got inspired from this thing. We don't know anything for sure, but I'm pretty sure कैमरा ब्रांड्स कुछ ना कुछ तो ऐसा डिज़ाइन कर रहे होंगे जो हमको फ्यूचर में इंटरनल रॉ कैपेबिलिटीज़, इंटरनल कंप्रेस्ड रॉ कैपेबिलिटीज़ अपने कैमराज में मिल जाए। द पैटेंट स्टिल होल्ड्स, बट वी हैव टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स द ब्राइटर फ्यूचर, एंड Nikon played a huge part in it. I cannot wait to see a future where all of us can shoot internal compressed RAW in all of our cameras. That would be a game changer, and I think we all deserve this. Let me know in the comments if you agree with me. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, be kind, keep grinding. Bye bye.